children, today is our English class and from English book I am going to teach you today 3-letter words of a sound. So children, you are going to open page number 10 and the chapter is chapter 3, phonic sound of vowel A. Children, I have taught you 2-letter words. Now we are going to learn 3-letter words of a sound. Okay children, now you will see chapter number 3. Chapter number 3 name is phonic sound of vowel A. Children, today we are going to learn 3-letter words of a sound. M-A-N, man. You have to read like this only how I am showing you. H-A-T, hat. A-N-T, ant. C-A-R, car. R-A-T, rat. B-A-L-L, ball. F-A-N, fan. B-A-T, bat. C-A-T, cat. Okay children, these are 3-letter words of a sound. You have to learn these words at home. Now, here there are some more words of a sound. So, we will read. See, P-L-A-T, plate. You know what is plate? Plate means जिसमें हम खाना खाते हैं. D-A-T-E, date. Date means तारीख. S-L-A-T, slate. Slate हम जिस पे लिखते हैं. L-A-T-E, late. Late means अगर हम देर हो जाती है उसे लेट बोलते हैं. S-K-A-T-E, skate. Skate तो पता है ना, जिसे पाँव में पहन के आप लोग चलाते हो. G-A-T-E, gate. Gate means हमारे घर के सामने एक गेट लगा रहता है जिससे हम अंदर और बाहर जाते हैं. This is S-T-A-T-E, state. C-R-A-T-E, crate. These are also a sound words. Children, you have to, again I am repeating, you have to learn all these 3-letter words of a sound. Okay? Now, I am going to give you homework work in your book. First, you have to write homework. Put today's date. What is today's date, children? Today is 17. So, we are going to put the date. Then see. अब आपको क्या करना है? मैम ने डेट डाल दी है. अब आपको कैसे लिखना है? Now you recognize which picture is this? This is van. So you will write the first letter in capital and the second 2 letters in small letters. आपको इसी तरीके से ये सारे letters आपको बोल बोल के अच्छे से लिखना है और आपको ये 3-letter words भी पढ़ना आना चाहिए. एक बार मैम रिपीट करेगी. van, rat, man, fan, car, hat, ant, bat. ओके, आपको इन सबको देख देख के अच्छे सुंदर राइटिंग में, एक बार मैम ने लिखा है, अब आपको भी इसको लिखना है. ओके, अब मैम आपको एक होमवर्क और देगी. यू विल सी पेज नंबर 14. आप पेज नंबर 14 ओपन करोगे. उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्लैंक से आपको ये फिल करना है. आज अपन ने क्या सीखा? ए साउंड के वर्ड्स. ओके, सो यू हैव टू फिल ऑल द ब्लैंक्स विथ ए लेटर. द फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स. आपको पिक्चर देखना है और ये सारे वर्ड्स कंप्लीट करना है. नाउ आई एम शोइंग यू. दिस इज, विच पिक्चर इज दिस? बैग. So B is already written. Then they have given one blank. So we have to write
A, and then the third letter is G. So come on, we will read it. B-A-G. What is B-A-G? Bag. Now one more I will show you. Which picture is this? Bat. The first letter is written B. Second they have given blank. So ma'am has done for you. You will write A. Then the third is T. So you have to recognize the picture and fill all the blanks. Now I will repeat all these words once again. You will see the picture. Bag, bat, car, cat, fan, tap, rat, ant, ball. बेटा आपको सारे ब्लैंक्स में ए लेटर फिल करके ये वर्ड को कंप्लीट करना है और आपको घर पे इन्हें लर्न करना है. चिल्ड्रन, टुडे होमवर्क इज फ्रॉम योर इंग्लिश बुक. आज का आपका इंग्लिश बुक का होमवर्क है पेज नंबर 11 एंड पेज नंबर 14. Okay, you have to learn all this word and you have to complete this book exercise. Thank you. Children, now I am going to give you in your English homework copy word. So you will see carefully what I am giving and you have to learn and write all these words. आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से बोल बोल के सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखना है. मैम आपको अब कॉपी का वर्क बताएगी कैसे करना है. ओके, यू विल ओपन योर इंग्लिश कॉपी. यू विल राइट इंग्लिश होमवर्क, पुट टुडेज डेट, चैप्टर 3 फोनिक साउंड ऑफ वोवल ए. आप पहले सारा पेंसिल से लिखोगे. Now, which all words we have learned today, you are going to write neatly in your copy. जो जो words आज हमने पढ़ा है आपको उसको अच्छे से बोल बोल कर लिखना है. So the first word is M-A-N, man. Okay, what is this? M-A-N, man. You have to write this very neatly in your copy. Then the second word is car. C-A-R, car. आपको इसको इसी तरीके से सुंदर राइटिंग में कॉपी में लिखना है. Then F-A-N, fan. You have to write fan very neatly in your copy. Then H-A-T, hat. Then today last word I am going to give you is R-A-T, rat. So children, you have to write all these words very neatly in your copy. Once again I am revising all these words. बेटा मैं आज फिर से आपको ये सारे वर्ड्स रिवाइज करवा रही हूँ जो आपको कॉपी में लिखना है. The first is M-A-N, man. Second is C-A-R, car. Third is F-A-N, fan. Fourth is H-A-T, hat. And the fifth is R-A-T, rat. ठीक है, मैम ने आज आपको 5 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं. आपको कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है. Now children, I am going to give you the last work in your English workbook. You are going to open पेज नंबर 29. अब मैम आपको लास्ट वर्क जो आपका इंग्लिश वर्कबुक है उसमें देगी. आपको पेज नंबर 29 ओपन करना है और आपको जो मैम ने आज 3 लेटर वर्ड सिखाए हैं आपको लिखना है. अब एक बार मैम वर्कबुक के वर्ड्स पढ़ के बताएगी. B-A-D, bad. L-A-D, lad. P-A-D, pad. Then you will turn the page. You will come on page number 30 and is B-A-G, bag.
R-A-G, rag. T-A-G, tag. Then you will come on 31 and you will read D-A-M, dam. J-A-M, jam. Y-A-M, yam. Then you will see page number 32. The word is C-A-N, can. F-A-N, fan. V-A-N, van. So children, in your English workbook, I have given you 4 pages. And here once again I have written the pages number. You will see very carefully. You have to do page number 29, 30, 31, 32. आपको आपकी इंग्लिश वर्कबुक में मैम ने कुछ पेज करने के लिए दिया है और वो पेजेस का नंबर है पेज नंबर 29, 30, 31 and 32. So children, you have to learn all these 3 words which I have taught you today. आपको ये सारे 3 लेटर वर्ड्स आपको अच्छे से घर पर बोलना है, सीखना है और सुंदर राइटिंग में करना है.